Hello everyone. This is video 2 of higher education system. In previous video, we have covered about ancient education system. In this video, we will be covering important points regarding Buddhism. So, without delaying further, let's get started. Siddhartha, एक क्षत्रिय prince थे. He was born in Lumbini, which is located in the foothills of Himalaya. So he was a prince of Shakya kingdom. Despite living a luxurious royal life, Siddhartha was deeply moved by human suffering. He renounced his palace life in search of truth and eventually attained enlightenment, becoming Buddha, the enlightened one. So Buddhism believed in the concept of Gnostic schools. So Gnostic schools means they are rejecting the authority of Upanishad. They did not believe in the supreme authority of Vedas. So this same concept was also followed by Jainism and Charvakas. So they believe that there is no permanent soul. There is no permanent entity in man. And they believed in the concept of nirvana, means total freedom and there is no sufferings. So now let's go through the four noble truths. First one is dukkha, dukkha hetu, which is also known as samudaya, dukkha nirodha marga. So what is dukkha? Dukkha is the truth of sufferings. Dukkha hetu means the region or origin of sufferings. Maybe it can be a particular desire of something, attachment towards something which is creating that suffering. Dukkha Nirodha says cessation of suffering. This suffering can be eliminated. And Dukkha Nirodha Marga is a path through which you can eliminate the sufferings. So now let's study the two important ceremonies. One is Pabbaja and Upasampada. So Pabbaja is the act where you leave home and join the monastic communities. It's the very first ordination. Here you take admission when you're 8 years old. Educational period is of 12 years, so you complete your education by 20 years. And followed by Upasampada. Upasampada is second ordination, which is a higher education after which you can become a monk or a bhikshu. So this is just for knowledge purpose, how Pabbaja and Upasampada takes place. So these are the steps where in Pabbaja you're going forth as a novice and in Upasampada higher education as a monk takes place. So now we'll be covering a very important concept which is Hinayana and Mahayana. So what is Hinayana? In Hinayana, the followers believed about the original teaching of Buddha. They believed in salvation, self-discipline and meditation. They did not believe in the worship of idol. And mostly these were in Pali language. Whereas in Mahayana, it was different. They believed in heavenliness of Buddha. They believed in idol worship. And this was mostly in Sanskrit language. So now we'll be studying the eightfold path. So UGC नेट का सिलेबस बहुत ह्यूज है, तो आप हर एक पॉइंट को याद करो वो पॉसिबल भी नहीं है. But it's very important to at least know the concepts, क्योंकि अभी these kind of questions can be asked in MCQ कि identify the eightfold path or identify which option is not a eightfold path. So that's why it's very important to at least know it. So in simple way, all the right things are coming under the eightfold path. First one is right view. किसी भी चीज को आप सही तरीके से देखो. Right intention, आपके intention सही हो. Right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. So in the very same way, it's very important to know the दस सिक्खा पदा. तो हम इसको एक स्टोरी के फॉर्म में लर्न करेंगे ताकि कि आपको पता रहे कि ये 10 ही 10 सिक्खा पदा में आता है. ठीक है, तो अब हम 10 सिक्खा पदा को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं. तो पहले क्या हुआ, मॉन्क जी अपने मोनास्ट्री से बाहर चले गए. तो जब वो मोनास्ट्री से बाहर गए तब उन्होंने देखा कि एक डियर था और बुश में ट्रैप था. तो उन्होंने उस डियर को मारा क्या,
नहीं, because they choose the path of non-violence. उन्होंने उस डील को समझदारी से बुश से बाहर निकाला और फिर वापस जा रहे थे। जब वो वापस जा रहे थे उन्होंने देखा कि भाई किसी का तो वॉलेट गिरा है। वॉलेट गिरा हो और चोरी तो कर ही सकते पैसों की, but they choose not to steal and to return back the item to the original owner. जाते 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 बहुत लोगों ने ना उनको मतलब भटकाने की कोशिश की। They tried to influence him by various things, but he had control of his desire. उसके बाद किसी ने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो चाहते थे तो वो झूठ भी बोल सकते थे, बट उन्होंने हमेशा सच बोलना प्रेफरेबल समझा, तो वो सच बोलते थे। फिर वो और जा रहे थे तो उनका मतलब रास्ता कठिन नहीं था। बहुत लोग थे जो जानबूझ के ऐसे कर रहे थे मॉन्क के साथ, देखने के लिए कि वो कितने हद तक भटकते हैं कि नहीं। फिर किसी ने बोला कि भाई अल्कोहल पी लेते हैं, अल्कोहल फ्री में दे रहा हूं मैं, बट ही सेड नो, आई विल नॉट गो फॉर इंटॉक्सिकेशन। फिर उसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठ के रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जाने का टाइम हो गया था, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के रिलैक्स कर रहे थे और उन्होंने अपना खाना खा लिया था। फिर बाद में उन्होंने एक बार खाना खा लिया तो अगेन ही वाज नॉट ईटिंग, क्योंकि उनको एक रूल है कि प्रॉपर ईटिंग टाइम में खाना है। एक बार खा लिया हो गया, इट्स नॉट कि रफ टफ ईटिंग, वापस ईटिंग अनयूजुअल टाइम में नहीं। फिर जब मोनास्ट्री के पास जाने वाले थे उधर डांस म्यूजिक चल रही थी, तो चाहिए था तो वो भी जाके डांस म्यूजिक का हिस्सा बन के फिर जा सकते थे मोनास्ट्री, बट दे चूज नो एंटरटेनमेंट। फिर किसी ने बोला मॉन्ग जी प्लीज आप ये हमारी तरफ से थोड़ा परफ्यूम गार्लैंड एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ही सेड नहीं, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ परफ्यूम गार्लैंड डेकोरेशन बेस्ड आइटम। फिर वो अपने मोनास्ट्री अच्छे से पहुंच गए। उधर लग्जरी बेड का इस्तेमाल नहीं होता है, उधर अपना मैट बिछा के सो गए। किसी ने सुबह उनको बोला कि आप मॉन्क जी हो, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम एज ए ग्रेटिट्यूड आपको गोल्ड सिल्वर वेल्थ देना चाहते हैं। उन्होंने उस चीज के लिए भी मना कर दिया। तो ये हो गए हमारे 10 सिक्का पदार्थ। So these are certain important viharas and sanghas, and questions can be asked like which sangha was the starting of Mahayana or Hinayana. So we'll just note it down. So Nalanda was the starting of Mahayana. Takshashila, Vikramshila emphasized on Tantric Buddhism. Vallabhi was the starting of Hinayana. Udantapuri was one of the viharas or sanghas. Jagadalla focused on Vajrayana Buddhism. Vajrayana Buddhism is also known as diamond vehicle. So it is a branch of Mahayana Buddhism. It emphasized on meditation, symbolic practices to achieve spiritual awakening. So here also Tantric Buddhism was taught. And the last one is Amaravati. Thank you everyone. So by this, we complete the concept of Buddhism. So see you all until the next video. Thank you. Have a good day.